boy Sayyid Mahmood Ali to deliver a speech. I have taken the role of head boy of our prestigious school. This badge on my chest is not just the symbol of responsibility, but it's a reminder of the trust you have placed in me. To our management, principal, and teachers, thank you for believing in me, and to all my peers, thank you for supporting me. Being a head boy is not giving orders, but it's about setting an example. I will listen more than I speak. I will strive to bridge the gap between students and make our school not only the place of learning, but the place of hard work, unity, and inspiration. Let us work together to make ourselves the best versions of ourselves. Thank you. Thank you, Mahmood. A very beautiful speech. Now I request our newly elected head girl Sakina Begum to deliver her speech. Good morning, respected Farhana ma'am, chief guest, principal ma'am, teachers, and my dear friend. I am Sakina, your head girl. It is indeed a moment of great pride and gratitude for me to stand here as the head girl of our school. This badge that I wear today is not only a symbol of honor, but also about the responsibility I carry. I would like to sincerely thank our Farhana ma'am, principal ma'am, teachers, and my friends for believing in me and giving me this opportunity to stand as the head girl of our school. I promise to lead by example with honesty, discipline, and respect, and to always work for betterment for our school. This role is not only about a leadership, but also about managing, helping, handling, and supporting each other. With the help of my prefects and my classmates, I will try to strive and maintain spirit and values in our school. Let us work hand in hand to shine our school more brighter than ever. Thank you. Thank you, children, for your valuable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A very good morning to all of you. First of all, I would like to thank Farhana ma'am for inviting me to the school. It's a pleasure to come to schools, and especially Investiture Ceremony is my favorite because it takes me back in time. जब मैं स्कूल में थी तो मैं भी कैबिनेट में थी, तो मुझे हमेशा जब भी मैं ये सेरेमनी अटेंड करती हूँ, I remember the time we had in school. So it's very nostalgic moment for me to think about how proud you feel, how good you feel when you receive the sash and also the badge. But you realize, especially all the cabinet members, I want to tell you that you realize that with that badge comes a lot of responsibility. बहुत responsibility आपके ऊपर आती है. सिर्फ वो badge आपके पास नहीं है, आपके पास responsibility भी है. अभी आपके head boy और head girl बहुत अच्छा बोले हैं यहाँ पे कि हम लोग जो है सुनेंगे ज़्यादा कि प्रॉब्लम्स क्या है, तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है कि आपको सुनना है क्या क्या प्रॉब्लम्स है दूसरे बच्चों के और उसको सॉल्व करना है. तो ये आप हेड बॉय बन गए, हेड गर्ल बन गए, डिसिप्लिन मिनिस्टर बन गए या कुछ और कल्चरल मिनिस्टर बन गए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है आपकी. अब यहाँ से आप लोग अपने लीडरशिप स्किल्स पे काम करना है और आगे चल के बहुत बड़े लीडरशिप रोल्स आप लोगों को, you have to make sure that you come into leadership roles.
very very important for all the children. I'm telling you, जिसका जो elect नहीं भी हुए हैं, जो leader नहीं भी बने हैं यहाँ पे आज, क्योंकि पूरे लोग elect तो नहीं हो सकते, मगर हम लोगों को हमारे अंदर एक we have to develop a skill where we consider ourselves leaders. इसका मतलब ये नहीं है कि we become proud or we become oh wow, I'm a leader, I am a minister, I'm the head boy, I'm the head girl. That's not what we should be doing. The first quality of a leader is humility. आप अपने अंदर एक ह्यूमिलिटी पैदा करना, एक काइंडनेस पैदा करना, दूसरों की बात सुनना, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक बार आप वो करना शुरू करें तो आप देखो ऑटोमेटिकली आप बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। फरहाना मैम यहाँ पे बैठी है, शी इज अ वेरी हम्बल पर्सन। वो इतने ज्यादा सोशल वर्क के काम करती है, कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क करती है, कहीं भी किसी को भी हेल्प चाहिए, शी इज देयर। यू हैव अ रोल मॉडल बिफोर यू हियर। तो आप लोगों को रोल मॉडल्स ढूंढना है और उनको फॉलो करना है। ये लीडरशिप की जो जर्नी है आपकी, ये अब शुरू हुई है, इट्स नॉट एंडेड। अरे मैं इलेक्ट हो गया, मैं इलेक्ट हो गई, मेरा इलेक्शन हो गया, मैं जीत गई, मैं जीत गया। इलेक्शन में आप लोग काफी हंगामा करते हैं और काफी वोट्स के लिए बात करते हैं। तो इलेक्शन तो सिर्फ एक प्रिलूड है, उसके बाद जब आप इलेक्ट हो जाते, जब आपकी असली जर्नी शुरू होती है। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आई एम टेलिंग ऑल दोज हु आर इलेक्टेड, आप अगर यहाँ इलेक्ट हुए हैं तो कल आपका एम रहना कि कल मैं मिनिस्टर बनूंगा, चीफ मिनिस्टर बनूंगा, प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, प्रेसिडेंट बनूंगा, कॉर्पोरेटर बनूंगा। ऐसा आपका एम रहना। आप लोग सोचना कि मेरे को बड़े बड़े काम करना है। एक सेइंग है कि डेयर टू ड्रीम एंड केयर टू अचीव। डेयर टू ड्रीम, ऐसा मत सोचो कभी भी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को अब्बा नहीं बोलते, अम्मी नहीं बोलते, या मैं हमारे अब्बा के पास पैसे नहीं है, इतना नहीं कर सकते उन्होंने। नहीं, आपको करना है, आपको मेहनत करना है। और आप जब अच्छा पढ़ने लग जाएंगे, आपका एक्सीलेंस आप बताएंगे, तो आपके पेरेंट्स भी एनकरेज होंगे, वो कहीं ना कहीं से आपको इंतजाम करके और आगे पढ़ाएंगे। क्योंकि हमारे पास एक ही रास्ता है, पढ़ाई। We have only one chance in life. Please remember this very very well. हमारे पास एक ही रास्ता है, तो हम आगे बढ़ेंगे लाइफ में। अगर हम अच्छा नहीं पढ़े तो हम जहाँ हैं वहीं पे रहेंगे, फिर वही सोचेंगे कि अरे पैसे नहीं है, हम क्या करेंगे, कैसा करेंगे, and all that. You will get stuck into that. अगर आप अच्छा पढ़े तो आपके पास हर चीज आएंगी। और अगर आपकी नीयत ये होगी कि मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपनी कौम के लिए कुछ करूंगा या करूंगी, तो आपके हर काम में बरकत होगी। प्लीज रिमेंबर दिस वेरी वेल। ऑल द चिल्ड्रन आई एम टेलिंग यू, आप अच्छा पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ो, और फिर देखो हर चीज के लिए आपको परमिशन मिलेगा, हर चीज के लिए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई नो यू आर ऑल वेरी एक्साइटेड. I will not take too much of your time. All the best and congratulations to the staff too. I think you have really put up a good show. I know how hard the teachers work and the staff works. Apart from the management, of course, works very hard, but the teachers and the staff go to make a school. So all the best to you, all of you. Thank you.
Thanks for the motivation, ma'am, from all of our cabinet members. And we promise that we will fulfill all of our responsibilities. We will see the situations of our fellow students, and we promise that we will listen to them and we will solve them. And very thanks for your motivation. The point you say, dare to dream and then fulfill it. It's a very deep point that it's depend on ourselves, that if we dream, then we could take a stand for our own self and we can work hard. Very thank you, ma'am, for all of us cabinet members. We promise to fulfill all the responsibility, and from the next time we met, ma'am only will say you that they have followed the responsibility. Thank you. To present vote of thanks. Assalamu alaikum. I express gratitude for those who have contributed for this event today. It acknowledges the efforts of organizers, speakers, guests and other participants, highlighting their roles in making the event successful today. Thank you. Now I request my friend Asma teacher to preside over the foundation day. I am truly delighted to stand before you today to celebrate our school's Founder Day, a day that holds great significance in the history and tradition of our institution. It is a momentous occasion that allows us to reflect on our past, celebrate our present achievements, and look forward to a promising future. Founders Day is not just a date on the calendar, it is a reminder of the vision and dedication of those who laid the foundation of our school. Let us honor the vision of our founders, Khan Sir, Muhammad Fatehullah Khan and his companion by nurturing an environment of learning, growth and compassion, making our school as the institute of choice for all parents. Together, we can ensure that our school continues to thrive and inspire generations to come. Now, I call our Principal Samina ma'am to come forward and continue with the speech. Assalamu alaikum. To respected management, management of our school, teachers, parents and students present here. With due respect, I would like to share the journey of our school, that's Millet Model High School. As Chintalguda was a thickly Muslim populated area where there was no school for Muslim children, a few well-wishers formed a society, that's Millet Education Society, and established Millet Model School in the year 1994 with the mission to uplift the community, in general the orphans and the poor children. The school was started in a rented building opposite to Jamia Masjid, Chilkalguda. There were 125 students with 9 classes from LKG to 7. Orphans and poor students were given free books and uniforms by the society members. The expenditure of the school was met by the monthly contribution of Millet Education Society members and well-wishers of the community. As the building was in a dilapidated condition, there was a need to shift the school in a safer place. The society acquired a plot in Chilkalguda and wanted to construct a school building of its own. On 29th July 2002, the foundation stone for the building was laid and construction work was started. So, we are celebrating today as the Foundation Day of our school in remembrance to the people who have worked hard for our school. Muhammad Fatehullah Khan sir played an active role in its construction. Millet Model school children were encouraged to learn and participate in events. Children were awarded for their achievements. Millet Education Society members worked tirelessly to get recognition from the government
in the year 2013-14 to accord Millet Model School status into Millet Model High School. We remain indebted to our late legends whose contribution to this institution are memorable, like Muhammad Fatehullah Khan Sahab, Hai Sahab, Muhammad Yusuf Sahab, Mr. Abdul Jabbar Sahab, and M.A. Aziz Sir, the untiring secretary. In the year 2016, Muhammad Fatehullah Khan Sir handed over the responsibility of the school to his daughter and son-in-law, that's Farhana Ma'am and Ghazi Sharif Sir. The legacy is carried by his family members. There have been many changes in the school from 2006 onwards in terms of academics, extracurricular activities, professional development, events and celebrations, community services, school infrastructure, etc. Few, as the number is endless. Opening of nursery class, first ever DNIAT exhibition, Sports Day, Pre-Graduation Day, Investor Ceremony, the Vibrant Annual Day celebration, counseling sessions for parents and students, the setting up of computer lab for our students, Millet Saturday Clinic, Millet Hifz Academy, etc. And a lot more concepts were introduced in academics and extracurricular activities. Ma'am has made efforts to transform the school to the present one. She is an icon of love, care and support to the teachers and students. She encourages students to participate in inter-school competitions. Mr. Muhammad Ghazi Sharif Sir is also an icon of commitment and renders his honorary services to our school. Thank you, sir. On behalf of the school, I avail this opportunity today to express a heartfelt thanks to Sohail Sir, son of Khan Sir, the present chief patron, for his commitment to the progress of the school. Family members of Khan Sir and Shakir Sir family for their continuous support. Equally appreciable are the endeavors of our staff whose devotion and enthusiasm towards the school are remarkable. Extending our sincere thanks to the parents who have lent a supportive hand down through the years. And it's my students too. By the grace of Allah, the school has grown and will continue to move forward together. Together, we will make this school all that it can be. Thank you. Jazakallah khair, ma'am, for reminding all the memories and efforts made by our great leaders. They are not the founders, but they are the great leaders to construct this place as the best place or the institution for the people who need a quality education. Yes? So thank you once again to all the members who are a part of this institution. Now, I would like to call our correspondent, Shakir Sir, to come forward and facilitate a Naeem Sir. Please have a big round of applause. मोअज़्ज़िज़ फ़ातिमा हज़रात, दीगर हाज़रीन व सामईन, बिलख़ुसूस मैं इसका मशकूर और ममनून हूँ
کہ ایسے موقع پر مجھے کچھ کہنے کے بھی کہا گیا. اور ایک ایسا وقت ہے جو بہت قیمتی اور نایاب ہے، جو یادگار رہے گا ہماری زندگی میں. وہ ہے ہمارے نعیم صاحب کی خدمات کو کچھ خراج تحسین پیش کریں. یہ ایسے خدمات ہیں ان کے جن کے الفاظ نہیں ہیں، نہ الفاظ ملتے ہیں ہم جیسوں کے. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہوتا ہے، قیمت اور چند روپے چند ٹکے نہیں ہو سکتے. تو ان کی بے لوث اور اتنی ایماندارانہ خدمات کے ہم اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، سوائے یہ کہ ہماری طرف سے جتنا ہو سکا ہم ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں گے. اور ان کی خدمات کا صلہ اس سلسلے ثواب جاریہ کے طور پہ وہ ملتا ہی رہے گا. اور اسکول کے بارے میں یہ میرے فتح اللہ خان رشتے میں میرے سر دوسرے ہوتے ہیں. میں تھوڑی بہت کوشش سے اپنی طرف سے آیا ہوں میں، مگر ان کی تڑپ جو تپش دل میں جو تھی، وہ تپش اور تڑپ مجھے یہاں کے کھینچ کر لے آئی اور میں یہ خدمت میں لگا ہوں. میں عہدے اور منصب کو میں نہیں مانتا، ہاں خدمت کے لیے میں مانتا ہوں. اتنے بہترین لوگ جب ہیں، بے لوث خدمت کرنے والے ہمارے محترمہ سمینہ میم ہیں، ناجرہ دیدی ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سارے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سارے کے ساتھ ان کی خدمات ایسے ہیں جن کو میں شمار گنایا نہیں لاتا. اس میں جو چھوٹا بڑا، چھوٹے بڑے کی اہمیت نہیں ہے. میں ایک مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں. میں ایک ہوائی جہاز ہے A380 جو ایک منزلہ ہے، ایک فلور اور دوسرا فلور. 13 سیڑھی پار کرنے کے بعد 14 سیڑھی پہ جب جاتے ہیں تب وہ فلور آتا ہے. اتنے بڑے ہوائی جہاز میں جہاں ضرورت پڑتی ہوگی تو ایک اسکرو جتنا اہم ہے وہ اتنی اپنی جگہ پہ وہ اہم ہے. تو اسی طرح سے ہمارے یہاں جو خدمات کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ خدمت کرتے ہیں، ساتھ میں کام تو نہیں کرتے لوگ، ہمارے ساتھ جو شریک ہے اس کام میں، ان کے لیے میں بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں. اور آج جو چیز جو دیکھا میں بہت اچھے طریقے سے پیش کیا گیا، جو بھی پروگرام کیا گیا، اور جس کی اناؤنسمنٹ اور کمپیئر جو تھی وہ بہت اچھی تھی. 14 اسٹوڈنٹس کے بارے میں 14 مختلف الفاظ اور جملے استعمال کیے گئے. یہ ٹیچر کا جو سارا ٹیچر ہیں ان کا یہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس کتنا ووکیبلری کا الفاظ کا ذخیرہ ہے. میں ماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا بچہ، بہت سارے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں اور ہمارے ٹیچر ریئلائز بھی کرتے ہیں، بہت سارے ماں باپ میں وہ تڑپ، وہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر اچھا ہو جائے. جب تک دل میں خواہش اور تڑپ نہیں ہوتی نہیں حاصل. اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینا پڑتا ہے. کوئی مقام پہ اگر کوئی کھڑا دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ ہماری میری زوجہ محترمہ فرحانہ خان، وہ اس مقام پہ دکھتی ہیں، ڈاکٹر ہے، کمپیوٹر سائنس انجینئر ہے، ماسٹرز ہے امریکہ میں. یہ جو مقام پہ کھڑے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس کے پیچھے محنت ہے. لہلاتی کھیتی کو جب دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، مگر اس کے پیچھے کوئی محنت کتنی کی گئی اس کو بھی غور کرنا چاہیے. باغ میں پھول کھلے ہوئے دکھے اچھے دکھتے ہیں، مگر اس پہ یہ بھی غور کریں کہ اس باغ پہ باغبان نے کتنی محنت کی ہے. بغیر محنت کے یہ ختم ہو سکتا نہیں. اس سے کوشش، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی محنت اور کسی کوشش کو رائے گاہ نہیں کرتے. اسی طرح سے میں بس یہ کہ ہم سب یہ دعا گو ہیں کہ نعیم صاحب صحت سے رہیں، اچھے رہیں، ہمارے ساتھ رہیں. ان کے کام کا تو اب بیٹھے رہیں، ہمارے ساتھ میں رہیں، قریب میں رہیں، یہی ہمارے کافی ہے. پھول جو ہے نا توڑنے سے اچھا نہیں تھا، بعض پھول پودے پر ہی، پیڑ پر ہی اچھے دکھتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے نعیم صاحب ہمارے ساتھ رہیں، آئے رہیں، یہی ہمارے بڑے خوش قسمتی کی بات ہے. اور میں تمام ٹیچرز کا شکر گزار ہوں، اور بچوں کا جنہوں نے جتنے بہترین طریقے سے اس پروگرام کو پیش کیا گیا. جزاک اللہ بالخیر. اسی لے کر آئیے. اب نعیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیے.
I'll take one picture. Ma'am, first stand. Ma'am, Farhana. Join. Allah आपको सेहत दे, हम ये ख्वाहिश करते हैं. And all the children have done good. Teachers, you have put a wonderful job. I don't know who all worked backstage. Everyone. Each and every teacher, you need a big round of applause to all the teachers. Please, again. And your untiring Samina ma'am also. Thank you, Asma, and thank you, Sarah, for doing such a wonderful job. Okay, and you have become a school. What I should say? Photographer? Yes. Okay. Clap hands for Asma teacher also. And all the teachers who have put up the show. Thank you, teachers. You have done very well. Thanks once again. Okay. And thank you parents for coming. Parents जो भी यहाँ पे मौजूद है, आप अपना वक्त निकाल के यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग का आना बच्चों के लिए जो है ना एक मोटिवेशन रहता. तो हमेशा जब कभी भी कोई चीज़ के लिए हम आपको इनवाइट करते तो ज़रूर आइए, थोड़ा वक्त निकाल के आइए बच्चों के लिए. तो आई वॉज हैप्पी टू सी ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. शुक्रिया. Now I request our HIF sir, Yahya sir to come forward to make dua. I request each and everyone to maintain silence and raise your hands to make dua. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे खताओं को दरगुजर फरमा, या अल्लाह हमारे लफ्ज़ों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे सय्यात व हसनात को बदल फरमा. या अल्लाह ये जो प्रोग्राम हिम्मत और हौसला अफजाई और आगे की तरक्की के लिए अल्लाह जो किया गया है, अल्लाह इसको बेजा कबूल मंजूर फरमा. या अल्लाह इसकी जो भी बुनियाद रखे अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा. या अल्लाह जो फिक्रमंद थे जिनकी फिक्र आज नज़र आ रही है, मोहम्मद अलहाद फजलुल्लाह खान साहब, या अल्लाह उनकी खबर पर मुझसे मुनव्वर फरमा. या अल्लाह उन्हें हम सब की तरफ से अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमा. या अल्लाह
जो भी लोग इस कार्य खैर में अल्लाह मदद कर रहे हैं, इमदाद कर रहे हैं, जिस रैन से भी अल्लाह फिक्र कर रहे हैं, या अल्लाह तो उनकी भरपूर मग़फ़िरत के फैसले फरमा, उन्हें सेहत नसीब फरमा, उनकी उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह शरीरों के शुरू से, या अल्लाह फितनों के फितनों से, या अल्लाह जो बुरे लोग हैं अल्लाह उनकी बुराई से अल्लाह इस स्कूल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग खैर के काम में हिस्सा ले रहे हैं अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमा। या अल्लाह टीचरों की भी हिफाजत फरमा, उनकी उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उन्हें भी नजायत खैर नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग अब तक मेहनत किए हैं और मेहनत कर रहे हैं अल्लाह उन्हें बेहतर कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह जो हमारे पराना बेटा बड़े हैं अल्लाह और हमारे बड़े शाकिर साहब हैं अल्लाह इनकी भी उम्र में बरकत अता फरमा। तारीफ है कि अल्लाह इनका साया हमारे ऊपर सलामत नसीब फरमा। या अल्लाह इन्हें सेहत वाली, आफियत वाली, इज्जत वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह और इन्हें इतनी हिम्मत दे या अल्लाह बहुत सारे अल्लाह राहते दिल को खोलने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी हिम्मत में अल्लाह बरकत अता फरमा। और जो लोग भी अल्लाह इन्हें साथ दे रहे हैं अल्लाह इनके भी अल्लाह साथ तारीफ तक इनके साथ नसीब फरमा। या अल्लाह तो रहम फरमा, करम फरमा, आफियत का मांगना फरमा। या अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने फजल करम से अता फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Finally, we end up with this program. So I thank each and everyone for being seated here patiently and listening to each and everything. Thank you all everyone. Students will be seated on their own places. They are going to move after the guest leave. फाइनली गाइस प्रोग्राम ख़त्म हो गया अच्छे से। सो इसी के साथ यहीं पे वीडियो एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक बात, सबसे पहले थैंक यू मैं टीचर को बोलती, क्योंकि टीचर की मेहनत है ये डेकोरेशन के पीछे। गाइस ये मेहनत आप लोग को दिख रहा होगा सिंपल, मगर बहुत जो भी है बच्चे भी देखो यहाँ पे देखो ऐसे ही करते रहते। देखो एंड ऑफ द प्रोग्राम पूरा ख़त्म हो गया। सो पूरा ये उठाना है, ये पूरा जो है ना गाइस पूरा सेटअप 8th क्लास के बच्चों के साथ टीचर, हाँ टीचर जो है पूरा करे। थैंक यू टीचर। 9th क्लास के बच्चे थे और 8th क्लास के भी थे एक बच्चा शायद ना, 8th क्लास का 9th क्लास। सो टीचर हेल्प करते हैं। और देखो पूरे टीचर्स अभी चले गए, फिर भी मैं ऑटो अंकल आ रहे बोल के खड़ी भी हूँ। सो थैंक यू टीचर, अच्छा सपोर्ट करते हमारे लिए, नहीं क्या। और माशाल्लाह बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हमेशा ऐसी खुश रहो, आबाद रहो। हाँ हमारी दुआ यही है, अल्लाह आपको सेहत दे दो। सो ज़रूर कमेंट करके बताना गाइस बैकग्राउंड कैसा था, क्या नहीं था, कैसा दिख रहा था प्रोग्राम आप लोग को। मैं तो एंजॉय करी, आप लोग एंजॉय करें नहीं करें वो ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरा ऑटो वाला भी आ रहे हैं अंकल, आने के बाद मैं भी चली आ रही, ठीक है। अल्लाह वहाँ पे फ़ोटोज़ लेने में बिजी है, फ़ोटोज़ लेने में। हाय हेड बॉय हेड गर्ल देख सकते हैं। दिस इज़ बदर हाउस वाइस कैप्टन। यस हियर टेल योर बैचेस वाइस कैप्टन कौन से है? रेड के है, बोलो। हाँ नेक्स्ट असद हाउस वाइस कैप्टन स्पोर्ट्स कैप्टन। नेक्स्ट नाजरीन वेयर इज़ योर बैच एंड सेशन? बैच इज़ हियर खैबर हाउस वाइस कैप्टन। पूरे खड़ गए गाइस, पूरे थक के खड़ गए। कहाँ है आपका बैच? कहाँ है? देखो गाइस, देखो गाइस बैच इनका, ठीक है। सो मुस्तकीम का बैच किधर? माशाल्लाह मुबारक। उल्टा बता रहे क्या जी? यहाँ पे भी देखो गाइस येलो हाउस वाले हैं, ठीक है। हुनैन कैप्टन। वाइस कैप्टन किधर है? वाइस कैप्टन आओ यहाँ पे। ऑल द वेरी बेस्ट। पूरे कैप्टन्स खड़े हुए हैं गाइस। चलो अल्लाह हाफिज़ बोलो सब लोग। टीचर का फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं। बाय 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 गाइस। चलो बाय, हम सब लोग मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग से। बाय। हेलो बोल बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।